गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर 1 और 2 में आपने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं तथा प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड हैं। एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच मैच्योर ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस young ones of their own kinds. Reproduction is an important process for continuity of species. In human, reproduction occurs by sexual method. इस चैप्टर में important contents हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, and last one is parturition and lactation. इन पॉइंट्स को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जैसा कि आपको मालूम है कि ह्यूमन्स के अंदर 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, मेल और फीमेल। इन मेल 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट, 44 प्लस XY, एंड इन फीमेल क्रोमोसोम्स आर 44 and XX. In male, reproductive organ is testis, but in female, reproductive organs are ovary. Testis produce sperms of 2 kinds. 50% sperms contain X chromosome and other 50% sperms contain Y chromosome. On the other side, all the ova are of same kind, they contain X chromosome. The process of formation of gametes is called gametogenesis. Now, during fertilization, gamete transfer and fuse with each other to produce new young one. If X sperm combine with ova, then girl child is produced, and if Y sperms combine with ova, then boy child is formed. Human is viviparous animal. It means human gives birth to young ones. After fertilization, zygote is produced, which undergo meiosis division to produce cluster of cells called morula. Then morula converts into blastula, and blastocyst enters into uterus and implanted in the uterine wall. After implantation, embryonic development starts, and it takes about 9 months, and after it parturition occurs. Parturition means birth of young one takes place. When puberty takes place, reproductive organs become functional in both male and female and start producing gametes. In case of boys, sperms produce continuously even in old age. It means puberty period से लेकर डेथ तक sperms continuously testis के अंदर बनते रहेंगे. But in case of girl child, when girl child is born, thousands of immature ova are present in ovary. After puberty, ova starts to mature and release from ovary every month. It means जब गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है तो उस वक्त गर्ल चाइल्ड की ओवरी के अंदर इमेच्योर ओवा प्रेजेंट हैं थाउजेंड्स, बट प्यूबर्टी के बाद न्यू ओवा प्रोड्यूस नहीं होंगे। जो इमेच्योर ओवा बर्थ के टाइम थे वो 1 by 1 मैच्योर होता है और हर मंथ ओवरी से रिलीज होता रहेगा। मिनार्च, व्हेन puberty takes place,
or when ovary starts ovulation is called menarche. It occurs during 12 to 13 years. Menopause, when ovary stop ovulation, then it is called menopause. It generally occurs at the age of 50. Male reproductive system includes primary male sex organ, accessory ducts, external genitalia, and accessory glands. Primary male sex organ is called testis. It produces sperms. Rete testis, vasa efferentia, epididymis, vasa deferentia. These are accessory ducts which help in the transportation of sperms which are produced in seminiferous tubules of testis to urethra. Urethra is external genitalia. Accessory glands. There are 3 accessory glands in male which produce secretion and help in the nourishment and transportation of sperms. These 3 accessory glands are seminal vesicle, prostatic glands and bulbourethral glands. बच्चों, इस डायग्राम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करके इन नाम को लर्न करो और इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।